Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss, so this is, you can say that this is also an introduction video of Gen AI. So I am going to cover many topics in this video. Okay, let's start with it. So Gen AI में हमारे पास कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं हम इसमें ये देखेंगे. ठीक है. फंक्शनल मॉडल्स होते हैं कुछ Gen AI में. वी हैव फंक्शनल मॉडल्स इन Gen AI. ठीक है. वी हैव टू टाइप ऑफ फंक्शनल मॉडल्स इन Gen AI. वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल मॉडल्स इन Gen AI. हमारे पास दो टाइप के फंक्शनल मॉडल्स होते हैं बेसिकली Gen AI में. पहला होता है मेरे पास यूज़र पर्सपेक्टिव. ओके. एंड सेकंड इज बिल्डर पर्सपेक्टिव. बिल्डर पर्सपेक्टिव. अब इनका डिफरेंस देख लीजिए. What happens in builder perspective? In builder perspective, we develop foundational models. हम foundational models को develop करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल LLM के जितने भी मॉडल्स हैं, GPT-5, GPT-4, इनको डेवलप करना, ये सब मेरा बिल्डर पर्सपेक्टिव में आ गया. और यूज़र पर्सपेक्टिव में क्या होता है मेरा? वी यूज़ फाउंडेशन मॉडल्स टू मेक एप्लीकेशंस. ठीक है. और यूज़र पर्सपेक्टिव में क्या होता है मेरा? We use foundation models to make application. For example, in one of my project, I have used LLM GPT-5 model to make my application of chatbot. So in this, ये वो मेरा user perspective था. We use foundation models to make applications. Okay, to make applications. Got it? ये हो गया मेरा यूज़र पर्सपेक्टिव. तो इसमें हो गया मेरे Gen AI में, मतलब मेरे के दो टाइप के मॉडल होते हैं. ये टू टाइप ऑफ फंक्शनल मॉडल्स इन Gen AI. फर्स्ट इज यूज़र पर्सपेक्टिव, सेकंड इज बिल्डर पर्सपेक्टिव. बिल्डर पर्सपेक्टिव में वी डेवलप फाउंडेशन मॉडल्स लाइक बिल्डिंग GPT-5 मॉडल ऑफ LLM. एंड यूज़र पर्सपेक्टिव का एग्जांपल है, वी आर यूजिंग द GPT-5 मॉडल ऑफ LLM टू मेक द एप्लीकेशन लाइक chatbot. So this is the difference between user perspective and builder perspective. In this series I am going to discuss about this user perspective. Okay. अब Langchain पे आते हैं. Langchain is an open source framework that helps in building LLM based applications. Okay. Langchain है क्या? Langchain एक बस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, मॉडल नहीं है. Langchain is an open source framework that helps in building LLM based application. LLM based applications, not LLM.
that helps in building LLM based application. लाइक जैसे मैंने एक चैटबॉट बनाया था यूजिंग LLM, तो उसमें मैं आपको उसका थोड़ा बहुत कोड भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है, डोंट वरी. सो Langchain इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग LLM बेस्ड एप्लीकेशंस. बहुत ही जल्दी मैं आपको कोड भी दिखाने वाली हूँ. LLM बेस्ड एप्लीकेशंस, ओके. It provides modular components and end-to-end tool that help developer build complex AI applications such as chatbot, question answering question, retrieval augmented generation and autonomous agents. So it is a so ये इतना आप याद रखिए तो भी काफ़ी है कि Langchain क्या होता है. It is an open source framework, okay, that helps in building LLM based applications. It provides modular components and end-to-end tool that helps developer build. तो इससे हम बहुत सारी ये सब चीज़ें बना सकते हैं. Langchain की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए. Some properties of LLM. Okay. There are some प्रॉपर्टीज ऑफ LLM. LLM की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, जैसे कि देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ LLM. देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ LLM. LLMs की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, जैसे कि क्या सपोर्ट्स और सब LLM की नहीं, Langchain की प्रॉपर्टी. हमें Langchain के बारे में पढ़ रहे हैं ना. Langchain इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क that helps in building LLM based applications, okay. It supports all the major LLM models. It supports all the major LLMs and simplifies developing LLM based applications, and it simplifies developing LLM based applications, okay. It simplifies developing LLM based applications and integrations available for all major tools. So for example, जब मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था यूजिंग द Langchain framework and using LLM based GPT-5 model, then I have integrated my model with SSMS, okay, as well as I have integrated my model with various document as well. So this shows that the integration is available for all the major tools. Integration available for all major tools, ठीक है. And fourth point is this is an open source free and actively developed, ठीक है. ओपन सोर्स है मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है इसे. ओपन सोर्स है एंड फ्री है और एक्टिवली डेवलप्ड है. and it supports majorly all Gen AI use cases. सबको सपोर्ट करता है. बस इतना याद रखना आप. इसमें अभी जैसे ये इम्पोर्टेंट है याद रखना
कि जेन एआई में दो टाइप के फंक्शनल मॉडल्स होते हैं. एक तो होता है यूज़र पर्सपेक्टिव और एक होता है बिल्डर्स पर्सपेक्टिव. इन बिल्डर पर्सपेक्टिव वी डेवलप फाउंडेशन मॉडल्स. ठीक है, ये वर्ड याद रखना आप बस. बिल्डर पर्सपेक्टिव में हम फाउंडेशन मॉडल्स को बनाते हैं और यूज़र पर्सपेक्टिव में हम फाउंडेशन मॉडल्स को यूज़ करके एप्लीकेशंस बनाते हैं. ठीक है, like developing the foundation models comes in builder's perspective, and using those foundation models to develop our application comes in user's perspective. And Langchain क्या होता है? Langchain in open source framework होता है that helps in developing LLM based applications. Okay, and next is प्रॉपर्टीज़ ऑफ Langchain. सो इट सपोर्ट्स ऑल दी. ये सब तो बस इतना याद रखने का नहीं है, ये सब आप रख देना कि हाँ, इंटीग्रेशन अवेलेबल फॉर ऑल मेजर टूल एंड Langchain हैज़. हाउ डज इट, ये बात याद रखना. हाउ डज इट, एक लाइन याद रखना. हाउ डज द इंटीग्रेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल द मेजर टूल्स, बिकॉज Langchain हैज़ रिटर्न दी wrappers for it. What are wrappers? Let me just see what are wrappers. Langchain has written wrappers for it. What? Wrappers. Are wrappers. What are wrappers? Wrappers is basically a layer of code that wraps around another piece of software, library or API. Its purpose is to make interaction simpler, more unified, more user friendly. In Langchain integrates many tools like OpenAI, Hugging Face, Pinecone, SQL database, APIs, etc. Each of these has different API method and format. Example, instead of you have to learn all them, several Langchain provide wrapper. Example, OpenAI LLM wrapper makes calling GPT simple. SQL database wrapper make querying database via LLM uniform. Pinecone vector stone wrapper same interface as APIs Chroma. So as a developer, you can call a standard Langchain method and the hood the wrapper translated to specific API calls. ओके, सो ये होते हैं मेरे रैपर्स. ज़्यादा इसमें देखना नहीं है. Langchain हैज़ 3 वर्जन्स, 0.1, 0.2 एंड 0.3. Langchain इसमें इस वीडियो में हम 0.3 वर्जन के बेसिस पे चीज़ें देखेंगे. Langchain हैज़ 3 वर्जन्स, 0.1, 0.2 and 0.3. Okay, and Langchain is an open source framework for developing LLM, for developing applications. So that is all about Langchain today, guys. So now in another video I'm going to show you why do we need a Langchain, and for that I'm going to show you a big example. So that's it for today, guys. Now we'll meet in another video, another session. Until then, goodbye, and please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.